Good morning, all of you. Today we discuss the next point in your unit for cell biology. The point is about the ultramicroscopic structures of chloroplast. The question may be asked in exam like write note on ultramicroscopic structures of chloroplast. So this chloroplast, it is one of the cell organelles which are present in the plant cells. So the plastids or the body containing the chlorophyll pigments, that's why this cell organelle is called as क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्यों बोलते हैं तो उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है उसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट रहते हैं इसलिए उसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट. So this presence of this chloroplast, it is one of the important characteristic features of the green plant. So as you know, due to this chloroplast, the plants they can make their own food, that is autotrophic nutrition, or they can prepare their own food material. That's why these plants are known as the autotrophic. So here these chloroplast, it is important characteristic features of the plant, and due to this chloroplast they can prepare their own food materials. So most of these chlorophyll pigments they are present in the leaf. So this is the figures. In that, if you can take the sections of the leaf, you can see here the number of chloroplast cell organelles which are present there. If we can enlarge these cell organelles, it is somewhat the discoid shape like chloroplast you can see here in the plant. Different shapes of the chloroplast are present. In most of these, the plants, the discoid shape of chloroplast is present. जो कि आप रहेगा, it is the discoid shape chloroplast, and most of plants the discoid shape of chloroplast will be present. The another type of chloroplast, it is the spiral shape. Case of this aloe vera, in that there will be the chloroplast arrangement. This chloroplast arrangement it will be in spiral shape or ribbon shape. फिगर में आप देख सकते हो कि जो स्पाइरोगारा सेल ऑर्गेनेलिज है उसमें सॉरी जो स्पाइरोगारा प्लांट्स है उसके अंदर हमें जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट हमें स्पाइरल शेप नजर आता है. Then third, there will be cup-shaped chloroplast. So in some plant, like the Chlamydomonas, it is in Chlamydomonas, it is the algae. So in Chlamydomonas, the chloroplast it is in cup shape. फिगर में आप देख सकते हो जो भी क्लोरोप्लास्ट है सेल के अंदर हमें कप लाइक वहां पे स्ट्रक्चर नजर आता है. Then in some these chloroplast it is in star shaped. So for example zygnema, it is also a algal plant. So in this algae zygnema the chloroplast it is in star shape. In some plants it is in oval shape or dispersed shape. So these are the different types of chloroplast which are present in the plant organisms. Like dispersed हमें mostly dispersed shape नजर आता है. कुछ जो अलगल प्लांट्स है लाइक स्पाइरोगारा में हमें स्पाइरल शेप नजर आता है. देन जो क्लाइमाडोमोनास है उसके अंदर कप शेप नजर आता है क्लोरोप्लास्ट. सो द जिग्निमा है, इन दैट जिग्निमा द क्लोरोप्लास्ट इट इज इन स्टार शेप. So the shapes of the chloroplast they will be variable shapes. Then the number of the chloroplast it is also the variable in plant to plant. Mostly in the plant cells, the chloroplast which are present in the plant cell it is up to 70 to 100. So in each cells, this chloroplast it is in 17 to 100 in numbers. But the most of this number of the chloroplast they will be vary
and they will be depending upon the size or the state of the leaves in the photosynthesis. So जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के हिसाब से जो भी लीव्स की जो क्लोरोप्लास्ट कंटेंट है, दे विल बी dependent. So the number of the chloroplast in plants, they will be variable in state. Then next is about the size of these chloroplasts. So chloroplasts which are present in the plant cells, the size, they will be also variable. The size of this chloroplast, it is ranges from 5 to 25 mm. So according to these state of these leaves or state of this photosynthesis process, the size of these chloroplasts are also variable. So this chloroplast, it is one of the largest cell organelles in the plant cells. फिगर में जो हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें तो जो हम आंखों से ऐसे देख सकते थे, जो एंटायर सेल का स्ट्रक्चर यदि आपने देखा होगा तो उसमें हम जो क्लोरोप्लास्ट है, देन माइटोकॉन्ड्रिया है, वैसे जो वैक्यूल्स है वो हम आंखों से देख सकते हैं। जो दूसरे एकदम छोटे वाले कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है, तो जो राइबोसोम रहता है, अमाइलोप्लास्ट रहता है, वैसे जो एकदम जो बल्गी बॉडीज है वो कैसे एकदम स्मॉलर साइज उसकी रहती है। तो इन सेल्स which chloroplast, which is also which will be in larger size. So let's move towards the chloroplast. So this is the picture of the chloroplast. This chloroplast, which is made up by the two membranes, that is outer membrane and inner membrane. So this inner membrane, they will be consisted the stroma, which is in semi-liquid fluid, and on that stroma there will be the granum that will be present, and these different granum, they will be interconnected. This granum, which is made up, these two granum that will be connected with the help of lamella, and this granum is nothing but the stack of this थैलाकॉइड। जो हम कॉइन लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जो कि स्टैक कॉइन्स, जैसे हम एक के ऊपर दूसरे कॉइन्स रखेंगे तो उसे उसी तरह यहाँ पे आपको जो ग्रैनम का स्ट्रक्चर है वो नजर आएगा। सो दिस ग्रैनम दैट कैन बी मेड ऑफ दिस ग्रुप ऑफ दिस thylakoid. So the structures of the chloroplast. So these chloroplasts, they can be made up by this double membrane, that outer layer. At the outer, the outer membrane is present, and at the inner side there will be inner membrane is present, and these both membrane are the continuously. So this inner membrane, this encloses the large space known as the stroma. जो अंदर साइड से जो क्लोरोप्लास्ट है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा. And this stroma, which contains the semi-solid fluid, and this fluid is called as matrix. स्ट्रोमा के अंदर जो एक semi-solid liquid present है, that liquid known as the matrix. Then this matrix contains the granum, DNA, ribosomes, and enzymes which required for the photosynthesis process. तो जो एंटायर हमने यदि इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन देखा तो उसके अंदर क्या क्या रहता है, तो एक सेमी सॉलिड फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट है, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं. और मैट्रिक्स में जो लिक्विड है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो वहां पे ग्रैनम प्रेजेंट रहता है, साथ में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, राइबोसोम्स है, और कुछ एंजाइम्स जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लगते हैं, वो एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं. तो इच ग्रैनम, जो ग्रैनम है, ग्रैनम कैसे तैयार होते हैं, तो वहां पे हमने देखा कि स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स है. तो थैलाकॉइड्स फ्रॉम ईच ग्रैनम में वहां पे 10 to 100 थैलाकॉइड्स, दे कैन अरेंज वन अबव दी अदर. वैसे एक ग्रैनम तैयार होता है. 10 से
100 थैलॉइड्स एक जगह पे एक के ऊपर दूसरे अरेंज होते हैं, उससे ग्रैनम तैयार होता है. So each thalakod, it is the single membrane bounded small stack-like structure, and inside it 200 to 215 quantasomes are present. तो यदि हम उसमें से एक थैलाकॉइड लेंगे तो वो हमें पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, which is in single membrane, and this single thylakoid they can contain the 200 to 215 quantasomes. थैलाकॉइड के अंदर क्या रहते हैं? Quantasomes. So each quantasomes is joined together by the three lamella. Three जो वहाँ पे थैलाकॉइड के अंदर जो क्वांटासोम्स है, क्वांटासोम्स दे विल बी 200 to 250 क्वांटासोम्स प्रेजेंट रहते. उसी तरह सिंगल क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे हमें डिफरेंट ग्रैनम नजर आ रहे हैं. तो दिस ग्रैनम, जो डिफरेंट ग्रैनम, दे कैन बी ज्वाइन टुगेदर विद दी थ्री लैमेला जो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड जो हमें line दिख रहे हैं, these are the lamella. So these quantasomes, it is the group of photosynthetic pigment and in the form of photosystem 1 and photosystem 2. तो जो क्वांटासोम्स है, क्वांटासोम्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहते हैं, और दिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट that known as the photosystem 1 and photosystem 2. So these and this is about the structures of the or the components of the chloroplast. So this chloroplast, it is the structural and functional unit of the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट सेल्स है वो क्या करते हैं, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेलिज है वो क्या करती है, तो जो लाइट है, लाइट और वाटर की हेल्प से वहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं, दैट इज द फोटोसिंथेसिस. सो या दिस क्लोरोप्लास्ट, इट इज द वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज, they can play the role of the photosynthesis, or they can play, or they can make the food material. So here the in this chloroplast dark as well as light reactions will be takes place. So the light reaction that will be takes place in the थैलाकॉइड. थैलाकॉइड के अंदर हमने क्या देखा कि उसके अंदर क्वांटासोम्स रहते हैं, क्वांटासोम्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहते हैं, दैट इज फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. So these quantasomes, they can in these quantasomes, the mostly the light reactions will be takes place, that is in थैलाकॉइड्स में हमने देखा कि यहाँ पे लाइट रिएक्शंस होता है, और जो स्ट्रोमा है, मतलब जो बाकी जो हमने देखा कि बाकी जो क्लोरोप्लास्ट का जो भी पार्ट है उसमें डार्क रिएक्शंस होता है. थैलाकॉइड से थैलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होती है क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और जो स्ट्रोमा का जो भी पार्ट है, बाकी जो बचा हुआ जो पार्ट है उसमें डार्क रिएक्शन होते हैं. तो इसमें आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि एक्चुअली डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है. तो ये आप ध्यान में रखो कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में होती है, और जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में. Functions of the chloroplast. So the main function of the chloroplast, it is the photosynthesis. Photosynthesis मतलब जो chloroplast है, it is the site they can convert the light energy into the food energy. जो भी सनलाइट है, सनलाइट में जो लाइट, सनलाइट से जो लाइट एनर्जी है उसकी मदद से जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेलिज है वो क्या करती है, फूड तैयार करती है, दैट इज फूड एनर्जी प्रिपेयर करती है. सो हियर दिस क्लोरोप्लास्ट दे कैन कन्वर्टेड light energy into the food energy. So the chemical equation is that the 6 CO2 plus, that is 6
carbon dioxide plus 6 molecules of water. In presence of the chlorophyll and sunlight, they produces the C6H12O6, that is the glucose molecules plus 6 O2 molecule, that is the oxygen molecule. So ये reaction आपको पता है photosynthesis में क्या होता है actually? These reactions will be happens with the help of carbon dioxide and water. These chloroplast cell organelles, in presence of the sunlight, they can convert it, these components into the food energy, that is they can make the glucose molecules and they liberated the oxygen, and on that oxygen different organisms, plants and animals, they can use this oxygen. So this is the main or important function of the chloroplast, that is photosynthesis, and the chemical equations. This is the chemical equations of the photosynthesis process. Then the next role of the chloroplast is the producer. Producer in the sense because in ecosystem the plants, they are known as the producers because they can produce the food material, and this food material will be transferred from one chain to the another chain, or one trophic level to the next trophic level. जो प्लांट्स फूड तैयार करते हैं वो फूड पे उसके ऊपर दूसरे ऑर्गेनिजम्स डिपेंड रहते, जैसे कि ह्यूमंस और सम एनिमल्स, दे आर यूज दिस। यदि ग्रास प्लांट है तो ग्रास प्लांट जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, उसे हम वो जो भी ग्रास है वो एनिमल्स को देंगे, तभी एनिमल्स हमें मिल्क मीट हमें दे सकता है। तो in the sense these whole ecosystem, these plants are the producers, and कैसे producers है वो जो है क्लोरोप्लास्ट है, उनके प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और उसकी मदद से ही वो फूड तैयार करते। सो अल्टीमेटली दे आर द ह्यूज ग्रुप ऑफ द प्रोड्यूसर्स। Then the third important function of the chloroplast, it is the protein synthesis. So in chloroplast molecules, they contain the DNA as well as ribosomes, and this from this DNA प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैसे तैयार होते हैं। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स रहता है, डीएनए से आगे जाके जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल से मैसेंजर आरएनए तैयार होता है, और जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में दिस मैसेंजर आरएनए will converted into the protein molecule. So this is the protein synthesis process. तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा कि वहां पे डीएनए मॉलिक्यूल्स भी तैयार है, डीएनए मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है। सो द डीएनए मॉलिक्यूल्स and some ribosomes, they can synthesize the protein molecules. Then the fourth one function of this chloroplast, it is the oxygen supply, because in the photosynthesis process they can utilize the carbon dioxide for photosynthesis, and they can release the oxygen. So this oxygen this oxygen will be used by the animals as well as plants for the respiration. So ultimately these are the oxygen supplier for animals as well as plants. So these are the four important chloroplast cell organelles. That is photosynthesis, it is producers. They also
help in the protein synthesis process, and they can supply the oxygen to other organisms like plants and animals for the respiration processes. So here the this is about the, so I just revise it again so you can easily got this point. So the जो chloroplast cell organelle है कहाँ पे present रहती है? These are present in the leaf cells. So in these leaves, there will be mesophyll cells, and on that mesophyll, the different or the number of chloroplasts will be present. And due to this chloroplast, the plant they can make their own food. That's why the plants are known as the autotrophic. Chloroplasts, they are found in variable shapes like discoid, spiral, cup shape, and star shape. About the number of chloroplasts, they will also vary. These found up to 17 to 100 of chloroplasts in each plant cell. Chloroplasts are also variable. The range of these chloroplasts it is from 5 to the 25 mu, and according to the state, the number. The structures of the chloroplast, it is double membrane structure. At the outer sides, outer membrane present. At the inner sides, inner membrane present. These inner membrane they can encloses the stroma. Stroma is nothing but the semi-liquid fluid, and this stroma they can contain the different components like granum, then DNA, ribosomes, and some enzymes which are required for the photosynthesis process. Then this granum, it is nothing but the stack of the thylakoid. In each granum, there will be 10 to 100 thylakoids. They will be arranged one above the other. In the thylakoids, there will be quantasomes are present. So each thylakoid they can contain 200 to 215 वहाँ पे quantasomes रहते हैं. And this on these quantasomes there will be photosynthetic pigments रहते हैं वहाँ पे. Photosystem 1 and photosystem 2 जो वहाँ पे pigments present रहते हैं. So in thylakoid, the light reactions will be takes place, and the remaining part that is on stroma, the dark reactions will be takes place. Function are very easy and simple. That is main function. It is main function of the chloroplast is the photosynthesis. Then the due to this chloroplast, plant become the producers. They can produce their own food material, and they can supply this food material into the food chain. Then this chloroplast also synthesize the protein molecules because the DNA and the ribosomes molecule they are present in the chloroplast cell organ. Then it is also the oxygen supply because in photosynthesis process plant uh, they can utilize the carbon dioxide and they liberated the oxygen. So ultimately they becomes the oxygen supply. So this is all about the one of the cell organelles which are present in the plant cell, that is chloroplast. So all of you clear this point. सबको ये समझ में आ गया?